So, good evening, everyone. Very good evening. Welcome to the YouTube channel of Knowell Bell once again. I am Akshita and I hope all of you are doing well as well. तो कल का जो सेशन था हमारा मैथ्स का सेशन था उसमें वी स्टार्टेड ऑफ विद एलसीएम एंड एचसीएफ एंड आज का एलसीएम का ही हमने बेसिक पार्ट डिस्कस किया था वी डिस्कस what do we mean by the term LCM we discussed about multiples common multiples we discussed a few properties of multiples फर्दर हमने एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था एंड देन वी हैड टू एक्चुअली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस लेट मी गिव मी अ मोमेंट वॉइस आ रही है क्या प्रॉपर्ली जस्ट लेट मी नो दिस आई चेक माय सेल्फ ओके the voice is clear okay so let us get started with the today's session. Okay, so yesterday we started off with LCM. LCM में हमने start किया था. We discussed about multiple. We learned actually what is the meaning of multiple. क्या क्या properties होती है multiples की. How do we actually define the multiples? After that we learned about the lowest common multiple. And हमने basic calculation सीखे थे जो कैसे आप LCM को calculate कर सकते हो. What we are going to learn in today's class is basically कल का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. उसके बाद the kinds of questions जो आपको स्पेसिफिकली एलसीएम से पूछे जाते हैं ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी लुकिंग इनटू जो एलसीएम से आपको पूछे जा सकते हैं सो पूरे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे बिकॉज इट्स वेरी वास्ट द वैरायटी एंड वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ इट एंड जो बाकी एचसीएफ के क्वेश्चंस बचेंगे एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस बचेगा and most importantly word problems that we will be covering in next session. Okay, so very first of all let us get started with the today's session. So we were discussing about LCM. What is the meaning of LCM? हमने कल देखा था that LCM stands for least, also often referred to as lowest common multiple. तो हमने पूरा इसका मतलब देखा था what do we mean by multiple, what do we mean when we are saying common multiples and what do we mean when we are saying lowest common multiple. So this entirely we checked it. Quickly हम एक क्वेश्चन देखते हैं कोई भी हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं that will help us to recap how to calculate LCM. For example, if I want to calculate LCM of 2, 4, 8. So in yesterday's class we learned a method कि आप simply एक line ऐसे draw करोगे. You are going to draw another line like that and 2, 4, 8. And we will be starting ahead with the LCM. हम LCM यहाँ से calculate करना start करेंगे. So we are going to divide these numbers with the prime number. Smallest prime number that is 2. उससे हम division यहाँ start करेंगे. 2 once is 2. 2 twice is 4. 2 fours is 8. Then again 2 once is 2, 2 once 2 and 2 twice is 4. Then again 2, 1, 1, 1. And in order to calculate LCM, ये जो आपको numbers obtain हुए हैं, you are going to multiply them. So 2 into 2, that's going to give you 4 and 4 into 2, that's going to give you 8. So finally जो आपका answer होगा, okay, final you are going to have LCM. वो LCM कितना है यहाँ पे LCM है 8. So इन kind of questions की हम आज के सेशन में प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं because we have practiced like I think 7 to 8 questions in the previous class. तो वो भी आप एक बार रेफर कर सकते हो और ये questions जो है you are very easily you will be able to do it and the chances कि ऐसे questions आपसे पूछे जाए इतने simple kind of questions they are little less. The kind of questions जो LCM HCF से थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं और very commonly we can say that they are asked are the questions associated with remainder, LCM, HCF, the questions dealing with remainder, and most importantly, word problems. Word problems are like a favorite part of Sainik school and RMS, LCM, HCF से. पेपर में हो ही नहीं सकता word problems ना हो. So word problems and remainders. So in today's class we will be dealing with questions associated with LCM and remainders. Okay. So before getting into the question, there are a couple of things जो मैं आप सभी के साथ यार डिस्कस करूंगी. That is to understand the words of a question. Okay. For example, अगर आपको किसी भी question में least mention है, okay, for example, in any question, what is the word mentioned? Least. Okay, find the least number, find the least that way.
ओके, दैट फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। अगर लीस्ट वर्ड आपको गिवन है, सो देयर आर 98% ऑफ चांसेस कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एलसीएम। What you have to find in the question? LCM. There are 98% chances. कुछ cases होते हैं कि question LCM से भी है, वहाँ least भी given है, but you do not have to move that way. तो वो questions हम अलग से देखेंगे. But you keep in mind अगर आपको least दिया है, so there are 98% chances कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन में LCM आप यहाँ पे फाइंड करने वाले हो। ओके, सो क्वेश्चन कैसे गिवन हो सकता है? क्वेश्चन कैन बी लाइक, आई एम गिव यू एन एग्जांपल। ओके, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड the least number that divides x y z। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, find the least number that divides x y and z। x y z आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। So इस केस में what you are going to do, you are directly, look, least is given, डायरेक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम किसका कैलकुलेट करेंगे हम? वी विल बी कैलकुलेटिंग द एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, इन प्लेस ऑफ लीस्ट ये भी हो सकता है कि आपको स्मॉलेस्ट दिया हो, यू आर गिवन मिनिमम, you are given lowest, okay, or any synonymous word to least। तो आपको वहां पे क्या करना है, you have to go ahead directly with LCM। So I have taken up a question, okay, like over here। Okay, there we go। So have a look at the question, find the least number which is exactly divisible by 36 and 45। Read the question carefully। What you have to do, find the least is given, ओके, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी डायरेक्टली गोइंग फॉर एलसीएम। कुछ भी नहीं करना है, देयर इज नो क्लटर ऑफ रिमाइंडर, देयर इज नो नीड ऑफ रिमाइंडर और एनीथिंग। लीस्ट इज गिवन, यू गो अहेड विद रिमाइंडर। आपको सिर्फ, सॉरी, यू हैव टू गो अहेड विद एलसीएम। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? द लीस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली डिवाइड्स? एग्जैक्टली डिवाइड्स और एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब होता है दैट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, what is the value of remainder? The value of remainder is 0. There is no remainder in this case. Okay, so directly that's why we will be moving ahead with LCM। तो चलिए एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में करते जाइए। You have got 36, you have got 45। Okay, among 36 and 45, 36 is divisible by 2, smallest prime number, तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 से 2, okay, and 2 18 16, yet again 2 9 45, 3 3 15, 3 1 5, and ultimately you have got 5। So what will be the LCM? Let us do it। 5 3 times is 15, 15 thrice is 45, 45 twice is 90, 90 twice is 180। So what will be the value of LCM? LCM यहाँ पे कितना आया? LCM is equal to 180। What is the value of LCM? LCM is equal to 180। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? हैव अ लुक डायरेक्टली, देखिए करेक्ट आंसर है 180। सो इट्स वेरी सिंपल, आप इस चीज का ध्यान दीजिए दैट अगर लीस्ट दिया है, लीस्ट के साथ व्हाट शुड हैव बीन गिवन? सिर्फ लीस्ट से काम नहीं होगा, लीस्ट के साथ या तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए या फिर अनदर वर्ड हैज टू बी गिवन दैट इज नो रिमाइंडर। या तो क्या दिया हुआ हो आपको, एग्जैक्टली डिविजिबल या फिर नो रिमाइंडर। अगर ये दो चीजें दी हुई है, यू आर गिवन विद दीज टू थिंग्स, लीस्ट and along with least, no remainder or exactly divisible, I am assuring you 99% of questions of such kind you have to take up LCM only। Directly you have to go ahead with LCM and question जो है यहाँ पे solve हो जाएगा। Okay, so this is one kind of question। If we will okay, rest of the questions are associated with remainder। Okay, so this thing you have to keep in mind। Okay, the second kind of question, okay, the type 2 kind of questions that are asked here is LCM and remainder। So what is given in the question? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, टाइप 1 क्वेश्चन तो सिर्फ हमारे लीस्ट वाले थे। इन टाइप 2 क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई होंगी।, what are the two things? The first thing is
there is a use of words such as least, minimum, smallest, or lowest. Okay, first thing is in this kind of questions आपको या तो word given होगा question में least, minimum, smallest और lowest, ये word आपको given होना चाहिए. Secondly, they will given a value of remainder. वहां पे क्या दिया होगा आपको? There has to be a value of remainder. कुछ remainder कुछ ना कुछ तो given होगा. So in this case, let us assume the remainder is k. Okay, so let us create a dummy question. हम एक mock question create करते हैं. Let us say the question is saying find the least number that divides x, y, and z, leaving remainder k in each case. It should leave what remainder? It should leave remainder k in each case. यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है. So what is one thing to notice over here? X, Y, Z क्या होंगे? X, Y, Z can be any three numbers. 3 या more than two numbers होंगे. कोई भी आपके numbers होंगे जिनके लिए आपको value find करनी है. What is K? K is actually your remainder. K क्या होगा यहाँ पे? K is going to be your remainder. इस case में आप क्या करेंगे? Nothing you have to do. Just go ahead, calculate LCM. LCM of X, y, z. आप कैलकुलेट करोगे x, y, z का LCM, जो नंबर्स गिवन है उनका LCM, एंड इन दैट यू आर गोइंग टू ऐड द रिमाइंडर. उसमें आप क्या ऐड करोगे? यू विल बी एडिंग द रिमाइंडर वैल्यू. जो भी आपकी रिमाइंडर वैल्यू है उसको आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर. तो LCM निकालेंगे हम x, y, z का एंड इन दैट यू विल ऐड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं that will help you to understand this in a more better way. Okay, so the question says find the least number which when divided by 12, 16 and 18 will leave in each case the same remainder 5. Okay, so what are the points to notice? First point to notice in the question is question ने बोला है least number. Least number मतलब question हो सकता है, हम sure नहीं है अभी, question हो सकता है. It is dealing with LCM. 98% of time it is with LCM. Which one divided by 12, 16, 18? 12, 16, 18 क्या हुआ हमारे? 12, 16, 18 are x, y and z will leave in each case the same remainder 5. आपको क्या दिया है? Value of remainder. तो k क्या हो गया है यहाँ पे? 5. So what you will be doing? Just as we discussed it. First हम क्या करेंगे? We will first take LCM of x, y, z. x, y, z क्या है? 12, 16 and 18. And in that we are going to add the value of remainder. उसमें आप remainder को add कर दीजिए. So very first of all we will calculate the LCM. वहीं से हमारा जो question है वो 50% से ज़्यादा solve हो जाएगा. So 12, 16 and 18. You have got 12, 16, 18 here and get started with calculating LCM. LCM हम निकालेंगे इसका 2, 6, 12, 2, 8 times 16, 2, 9 times 18. Then 2, 3 times is 6, 2, 4 times 8, 9 is not divisible by 2, तो हम 9 को ऐसे ही रहने देंगे. Then we have got 2. 2, 3 will stay same, 2 twice 4, 9. Yet again we will take 2, 3, 1, 9. Then we have got 3. 3 ones 3, 1, 3 3 is a 9, and then 1 again is 3, 1, 1, 1. Okay, so अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? We will take up it and हम LCM calculate करेंगे. So 3 3s are 9, 36, 36 twice 72, 72 twice is 144. तो आपके LCM की वैल्यू कितनी आई आप देखिए यहाँ पर. What is the value of LCM? ये जो पोर्शन था हमारा ये कितना आया? This is 144. इसकी वैल्यू कितनी आई? 144. Now in this, okay, as we discussed in the formula, हम क्या करेंगे इसमें? We will be adding the value of remainder. आप क्या करेंगे यहाँ पे? Remainder की जो वैल्यू है, remainder को आप यहाँ पर add करोगे. So you will add plus 5. What is the value of remainder? 5. So 144 plus 5 कितना मिलेगा हमको? 149. 144 plus 5 is 149. You can have a look. Answer भी यहाँ पे given है.
So what is going to be the correct answer for question? The correct answer will be 149. तो simple है, आपको कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ लीस्ट दिया है, there is no remainder, you directly go ahead with LCM. अगर remainder दिया है, calculating the LCM, you went to go ahead to what? You go ahead with your addition of remainder. जैसे ही आप remainder को add करोगे, what you are going to get once you will add the remainder, so you are going to get over here the value of the correct answer. So right answer in this case is 149. ठीक है, एक और question देखिए. This is also the question of similar kind. Find the least number which when divided by 98 and 105 will leave in each case the same remainder 10. Okay, so once again the पॉइंट्स टू नोटिस, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर का क्वेश्चन है, मतलब हमको जाना है एलसीएम की तरफ. ओके, कहाँ पे हम जाएंगे? वी विल बी डाइवर्टिंग टूवर्ड्स एलसीएम एंड इट हैज गिवन अस द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर? 10. फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एलसीएम, एलसीएम में हम रिमाइंडर की वैल्यू को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द फर्स्ट एंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो चलिए, किसका एलसीएम हमको कैलकुलेट करना है? इफ यू विल हैव अ लुक, वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 98 and 105. Okay, so 98 and 105. यहाँ पे भी देखिए. Okay, 105 is not divisible by 2, but since 98 is an even number, तो ये 2 से divide होगा. We will start with 2. 2 4 times is 8. 2 9 times is 18. Then 105. Okay, and we will try dividing it with what? 7. 7 times is 49. Okay, then 7 1 is 7, 3 will be remainder and that will become 35. So 7 5s are 35. Then you have got 7 and 15 will stay same. Then you can take 3. Then sorry, this will be 1. यहाँ पर 1. Okay, 3 5 times 15, 5 1 1. Okay, so 5 3s are 15. You have got 15 से अब further multiplication करते जाइए आप. 7 7 5 35, 1 carry, 7 1 is 7 plus 1 8. You got 85. तो हमने यहाँ तक carry out कर लिया. Now the next step, 85 into 7. Okay, या फिर आप another way कर सकते हो. 7 7 का 49 you do, 49 into 15 and that into 2. वो भी आप कर सकते हो if you want that way. तो calculation always keep in mind कि आप try कीजिए कितना calculation जो है आप उसको easy बना सकते हो. The more you will try to make it easier, the more better it will be for you. देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो. You and by practicing you will have to learn it. ये कोई बता नहीं पाएगा हमको कि ऐसे calculation easy होगा. The more you will practice, the more you will learn it. Look, 5 3s are 15. Okay, 15 into 2 30. 7 7s are 49. तो अब हमको क्या करना है? सिर्फ 49 और 30 को multiply करना है. So you multiply 49 with 3. How much you are going to get? 7. 2 carried. 1 4 7 0. So what is the value of LCM? LCM कितना आया हमारा? The value of LCM is 1470. Now what is remainder? देखिए हमने क्या लिखा था? LCM निकालना है. LCM में you have to add the value of remainder. What is the value of remainder? 10. So in 1470 you add remainder. That is going to give you answer 1480. आपको क्या आंसर मिलेगा? You are going to get the answer 1480. Okay, so this way you can solve the questions. LCM के, HCF के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जो मैं सभी क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, these are the questions from our study material. LCM HCF से ही alone there are more than I guess 250 questions and बहुत सारे similar kind of questions भी हैं, अलग अलग टाइप के हैं एंड पूरे हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपको सैनिक स्कूल RMS क्लास 6, बस इसी के लिए वो टारगेटेड है. हम ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप, वर्ड प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज गिवन इन देयर. तो हम वहीं से ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. इफ यू वांट टू एक्सेस तो आप हमारी वेबसाइट पे आप मुझे कांटेक्ट करके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो एंड पूरा जो है आपको इसमें क्वेश्चंस पूरे हर चैप्टर के अवेलेबल हो जाएंगे. हर चैप्टर से देयर आर मोर देन 100 क्वेश्चन, किसी में तो 300 तक भी गए हैं, बट 100 क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में है एंड सब क्वेश्चंस जो है वो
वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू भी सप्लीमेंटेड है। तो अगर आप कहीं घर पे पढ़ रहे हो एंड इफ यू फील लाइक कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं बन रहा है, सो यू कैन एक्सेस द वीडियो सॉल्यूशन फॉर इट। तो पढ़ाई जो है आपकी वो कहीं पे इंटरप्ट नहीं होगी। ओके, सो या next question we will have a look. Once again, this is the question of remainder. What is the least number which when divided by 24, 36 leaves in each case the same remainder 8? Okay, so once again, अब तो हमको सबको ये questions बन जाएंगे। Least number, LCM, remainder, that means क्या formula apply हुआ? पहले LCM निकालना है, LCM में we have to add remainder. Okay, so what will be the value of LCM? 24 and 36 का LCM हमको निकालना है। Quickly go ahead. 24 and 36. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 eights are 16, 2 6 12, 2 9 times is 18, 2 3 times is 6, 9 will stay same, 3 ones is 3, 3 thrice is 9, and ultimately 3 1 1. So अब हम multiplication करेंगे. And one more trick I share, many students do this. मैं देखती हूँ वो ऊपर से multiplication करना start करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, and this way. बट दिस इज अ ट्रिक कि आप हमेशा एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ करिए, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको 2 2 2 2 मिलेगा. So you just have to double the value. That becomes easier. So always, okay, you have to just try, do your best कि आप नीचे से ही उसको solve करो. So calculation easy होता है. Like look, 3 3 is 9. अब 9 का डबल करना है, 18 का डबल करना है, 36 का डबल करना है, 72. So you just have to get it double. तो आप नीचे से ऊपर इसको solve क्या करिए. What will be the value of LCM? The LCM you are getting here is 72. कितना LCM आ गया? 72. And अब इसमें हम इस remainder की value को add करेंगे. So you are adding it. 72 plus 8 is how much? 72 plus 8 is nothing but 80. What is 72 plus 8? 72 plus 8 is nothing but 80. तो correct answer क्या होगा यहाँ पे? Option C. We will get 80. Okay. And okay, this is one more question. What is the least number which when divided by 36 and 48 leave 8 as remainder? So फिर से question को देखें. Least for LCM. Okay, remainder is also given there. And LCM के साथ अगर remainder है तो LCM में क्या हम add करेंगे? We will add remainder after calculating the LCM. तो सबसे पहले the story will start by starting off with LCM. 36, 48. 2 ones are 2, 2 eights are 16, 2 twos are 4, 2 fours are 8. Then again, 2 nines are 18, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 9 will stay same, 2 6 times is 12, 2 9 will stay same, 3, then there you go, 3 1 3 and 3. 3 3 is a 9, 9 2 is a 18, 18 2 is a 36, 36 2 is 72, 72. Okay, options इसमें गलत दिए हुए हैं. Okay, 3 3 is a 9, 9 2 is a 18, 18 2 is a 36, 36 to 72, 72 into 2 is 144. Options are incorrect in this. Okay, answer आपका कितना आएगा? 144. And 144 we are going to add remainder. The value of remainder is 8. Okay, so 8 plus 4, 12. You are going to get 152. The final answer इस question के लिए कितना होगा हमारा? The final answer, the required least smallest number is 152. 152 is going to be the correct answer for the question. So ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. This way you will be able to solve all the questions associated with dealing with LCM, LCM and remainder. One more kind of question is there that deals with remainder of LCM. उसको हम next class में करेंगे. The question is basically like that कि अगर आपको numbers दिए हैं, in addition to number you are given the word least, and अभी तक तो हम देख रहे थे that you are just given one remainder. आपको एक ही remainder दिया हुआ है. Okay, so using that one remainder हम क्या कर रहे थे? We were doing LCM and in that we were adding the value of remainder. But what if हर number के लिए आपको अलग अलग remainder दिया? हम तब क्या करेंगे जब आपको हर number के लिए बहुत सारे अलग अलग reminders देगा? What can be done in that case? For that case हम कैसे उसको solve करेंगे? This we will be learning in our next session. So I hope today's session will be useful to all of you.
किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है, इन एनी पार्ट यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एलसीएम के बाद तो अभी ऑल तो काफी सारा बचा है एलसीएम एंड एचसीएफ, बट आप मुझे ये बता सकते हो कि मंडे ट्यूसडे को जो हम जीके के सेक्शंस करने वाले हैं, जीके के सेशन सॉरी करने वाले हैं, उसमें इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी, वो आप मुझे बता सकते हो, तो उसको हम क्लासेस में फिर कवर अप करेंगे। ओके, so with this everyone, we will be summing up our today's session. I hope the session was useful, and we will meet again tomorrow once again at 7:30 p.m. Bye everyone.